हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो समस्ते पिला माने जल्दी जल्दी टिके जॉइन हो जाओ क्लास रे सो दैट आमे हमर क्लास स्टार्ट करि दबा। आज द्रोण सीरीज जोटा कि बेस्ट इन योर टीचिंग एप्टीट्यूड, जमती कि पछपटे देखुथबो ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड इन वन वीडियो। तो इट्स नॉट द लास्ट, एटा स्टार्टिंग, एठू ही हमें स्टार्ट करबा। एंड आज ओवरऑल जहाँ भी एप्टीट्यूड रे हमर सिलेबस अच्छी सबू सिलेबस को आम आज गोटे जिस्ट हिसाब रे पढ़ा, क्वेश्चन करवा आज जिस्ट पढ़ा। एंड यस, या पर जिते भी सैटरडे आसीबो इच सैटरडे रो 9टा बेले ही तुमर हमर आमे को दिन टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कशन करबा, आमे को दिन एजुकेशनल अवेयरनेस डिस्कशन करबा। एमिति करिकि आमे कोन करबा डिटेली एग्जाम पर्यंत एवरीथिंग कवर करबा। ओके, गुड मॉर्निंग सोनाली, हैप्पी न्यू ईयर राजेश, गुड मॉर्निंग। तो समस्ते जल्दी जल्दी जॉइन हो जा एंड व्यस्त हेनी कि केमते टीचिंग एप्टीट्यूड गोटे वीडियो रे आज हमें जिस्ट आकर सबू किछु टिके 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 नहीं के पढ़िबा ना कि आज हमें पूरा जहाँ भी टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छी सबू किछु कवर अप कर दबा, सबू कर दबा, सेमती किछि नाही। ओके, समस्ते टिके जल्दी जल्दी जॉइन हो जा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास स्टार्ट करबा, जते जल्दी जॉइन हो जिवो। प्रणाम, गुड मॉर्निंग। जस्ट ए मिनिट पिला माने हमें स्टार्ट करदेबा। आ गोटे मिनिट अपेक्षा करबा, जदि समस्त टिके जॉइन हुंतु। हठात अचानक क्लास हेची, काले के जानिथिबे न जानिथिबे किंबा जेमिति सखाळ क्लास जॉइन हवा पई असुविधा होथबो। जय जगन्नाथ मीनू। गुड मॉर्निंग मैम, आज ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड बुझेबे ठीक अच्छे। तो स्टार्ट करवा आज क्लास को। समस्त को शुभ सकाळ, गोटे फ्रेश माइंड रे पळे आस। तो डिस्कशन करवा हमर जो द्रोण सीरीज चली। देख आज आमर फास्ट एक्टिविटी ना जिबा पूर्वर क्वेश्चन को गोटे जिनस व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एप्टीट्यूड। तो बेसिकली जिते बड़े आम कहूचे गोटे वर्ड बा गोटे नोशन टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स टू नो द स्टूडेंट्स एबिलिटीज, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड माने कौन? टीचिंग माने आमे जानिचे टू इम्पार्ट नॉलेज, ताहले एप्टीट्यूड माने कौन? एप्टीट्यूड माने स्पेसिफिक एबिलिटीज, स्पेसिफिक इंटरेस्ट एरिया ऑफ द स्टूडेंट्स। तो छुआर कौन एबिलिटीज अच्छी, छुआर कौन इंटरेस्ट अच्छी, छुआ कौन नीड करूची, से सब जिनस को गोटे टीचिंग एनवायरनमेंट रे जानिबार गोटे प्रोसेस को आमे कहूचे टीचिंग एप्टीट्यूड। एंड ऑल द सिलेबस जहाँ भी आम टीचिंग एप्टीट्यूड रा सिलेबस रे बीएड एग्जाम रे अच्छी, फॉर सपोज प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इन द क्लासरूम सिचुएशन, प्रॉब्लम एया प्रॉब्लम्स एया, एमिति केमिति आमे इम्पैक्ट करबा, केमिति आमे छुआ को हैंडल करबा, ए सब जिनस ही तमरा आसे। आइदर तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो गोटे टीचर प्रोफेशनल रोल केमिति हवा दरकार, नहले गोटे टीचर क्लासरूम सिचुएशन में एई प्रकार छुआ मानु को केमिति हैंडल करबा दरकार, ए विषय रे ही हमरो आसुची। तो फर्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन, ना गाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, ना गिविंग इंस्ट्रक्शन,
na controlling the students only? Teaching is best described as a process of Good morning. समस्ते आंसर देबा चेष्टा कर पिले. एक नंबर बी. ओके. यस प्राय आसुची ही लीजिया. वेरी गुड. तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी, दैट इज गाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस. कहीं भी है ना ऑप्शन दे देछि ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन. टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब. टीचिंग केवल नुह जे केवल आज ए टीचर टीचिंग रो माने नुहे आमे केवल नॉलेज टाकू बा इन्फॉर्मेशन टाकू इंपार्ट करि दबा. गिविंग इंस्ट्रक्शन केवल सेमान को एई बाटरे जाओ सेई बाटरे जाओ कहि दबा टीचिंग नुह. कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स तो गोटे नेगेटिव नोशन जोटा कि हबो नाही. तो गाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस हेई पारिबो. टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस को गाइड करी करी छुआ माने केमिति एनहांस करबे लर्निंग प्रोसेस तांको हेल्पफुल हबो. ताहले एठी मते गोटे क्वेश्चन आंसर दियो. व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग? डिफरेंस कोन? ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन. टीचिंग ट्रेनिंग एवं इंस्ट्रक्शन भितर डिफरेंस कोन पिले? टीचिंग ट्रेनिंग एवं इंस्ट्रक्शन भितर कोन डिफरेंस रहिछि? What is the basic difference between teaching, training and information? आंसर दिया समझते. प्रणाम. What do you mean by teaching, training and instruction? ए तीनटा भितर कौन डिफरेंस रही? इंस्ट्रक्शन दबा, टीचिंग प्रोवाइड करवा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा. टीचिंग माने providing information in a systematic matter, providing information by imparting knowledge to guide the learning experience. Training माने कौन सा? To inculcate or enhancement, to inculcate specific skills or enhancement specific skills. Okay, तुम skills को development करिबा होउची तुमरो ट्रेनिंग. ओके, तापरे टीचिंग होची प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन. सब किछि कहि हबा सुभाषेष तुमे चाहिले. इन्फॉर्मेशन बा इंस्ट्रक्शन होउची किछि गोटे इंस्ट्रक्ट करिबा बा गाइड करिबा जो हमें कहूचे गोटे छुआ को को हिसाब रे हमें गाइड करूचे गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे. Teaching is permanent change in the behavior. Teaching is the permanent change in behavior. Nuha Payal. Learning is the permanent change in behavior. Relatively permanent change in behavior. Teaching permanent change nuha. Teaching तमरा permanent change may भी करी पारे, may भी न करी पारे. Teaching टाको तमे को हिसाब रे acquire करूचा सेटा depend करे. Okay. Next. Second question. Which of the following is correct in laboratory method of teaching? Geography. Geography पढ़िया पाई गोटे laboratory method of teaching पाई कोउटा best suitable? Learning by doing, imitation and memorization. B. Learning by doing, observation and imitation. C. Learning by investigation, observation and memorization. D. Learning by doing, observation and investigation. कोउटा? CD रही लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन. जो लर्निंग बाय इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन. ऑप्शन डी जो माने कहूच पिला माने करेक्ट हबो. देख ऑप्शन डी सॉरी न कहि के आगु पळेली काहे के हबो. फास्ट लर्निंग बाय डूइंग रे लैबोरेटरी रे तमे एक्सपेरिमेंट करिवो, देन कोन हबो तमे ऑब्जर्व करिवो, से जिंस को ऑब्जर्व करिवो, देन इन्वेस्टिगेट मध्य करिवो. ओके, फास्ट इन्वेस्टिगेशन देन ऑब्जर्वेशन एंड मेमोराइजेशन. मेमोराइज एथिरे करा हबनी. देन लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन. इमिटेशन आसीबनी. पुनी एठी मध्ये इमिटेशन अछि. गोटे एक्सपेरिमेंट मेथड रे पिला माने इमिटेशन कथा आसीबो ही नाही. एक्सपेरिमेंट मेथड रे इमिटेशन कथा आसे नाही.
So that which of the following is the correct laboratory method? Eta dekha, learning becomes effective when students memorize facts, teacher dominates the class, learners actively participate, syllabus is completely yearly. Completed yearly. Kouta haba? Learning becomes effective when एठी जोटा पायल तमे कहूथुला तो लर्निंग कौन हे परिबो? लर्निंग इज relatively permanent change in behavior. Yes, right answer होजी ऑप्शन सी. कौन ना लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट जेतेबेले लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करि परबे सेतेबेले गोटे लर्निंग प्रोसेस बा लर्निंग एनवायरनमेंट इफेक्टिव बा फ्रूटफुल बोली प्रूव होबो. तो एटा को माने को थ्योरी अनुसार कहै छी ना कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी अनुसार कहै जाय छी कि लर्नर जेतेबेले एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवे सेतेबेले लर्निंग टा इफेक्टिव होबो. इट इज आल्सो कॉल्ड लर्नर सेंट्रिक. आकु आमे कहि परिबा लर्नर सेंट्रिक लर्निंग जो थिरे छुआ माने निजर प्रायर एक्सपीरियंस को यूज करके वर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन में कोनोसी नॉलेज को एक्वायर करूछंती. तो सेही जिनसडा होची कोन ना लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट एज ए लर्नर सेंटर्ड लर्निंग प्रोसेस वेयर लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव. ओके ठीक अछि किछि कथा नै. नेक्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड मेनली रिफर्स टू टीचिंग एप्टीट्यूड मेनली कौन रिफर्स करे पिला माने इंटेलिजेंस ऑफ टीचर, नेचुरल एबिलिटी टू टीच ना एकेडमिक क्वालिफिकेशन ना टीचिंग एक्सपीरियंस ओनली. जैस्मिन कल्याणी डी सी बी. टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग एक्सपीरियंस ओनली जोटी तुमको खाली दे देथिबा ना मोस्ट ऑफ द जगह रे तुम जानिबा कि गोटे टीचिंग एप्टीट्यूड कहूचे. मु स्टार्टिंग रु तुमको स्टार्ट कली कि व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एप्टीट्यूड ना टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एबिलिटीज, स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड सर्टेन एरियाज ऑफ द डेवलपमेंट. ओके जदि हमें जानिले ताले एठी कोन हम ना नेचुरल एबिलिटी टू टीच. राइट आंसर होजी नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ द टीचर. टीचर इंटेलिजेंस संगे टीचिंग एप्टीट्यूड रो कोनोसी लेना देना नाही. एकेडमिक क्वालिफिकेशन मध्य एटा हबो नाही. राइट आंसर होची गोटे नेचुरल एबिलिटी टू टीच और नेचुरल एबिलिटी टू लर्न मध्य हे परिबो कि गोटे छुआ नेचुरल एबिलिटी माध्यम रे जहा लर्न करूची बा गोटे छुआ टीचर नेचुरल एबिलिटी रे जहा भी टीच करूछंती दैट इज द टीचिंग एप्टीट्यूड. ओके specific ability or interest areas. 5 number the central focus of teaching should be curriculum, teacher, examination and learner. कौन हम पिले the central focus of teaching should be ओके समस्ते टिके आंसर दबा को ट्राई करो. समस्ते टिके एक्टिव रुह. bipolar process of teaching. Yes, very good. Option D कि द सेंट्रल फोकस ऑफ टीचिंग शुड बी लर्नर. लर्नर हबो. तो पिला माने एठी कहैछि गोटे हमर यस नेक्स्ट आसीबो कोन क्लासरूम मैनेजमेंट प्राइमरली एम्स एट व्हाट मेंटेनिंग साइलेंस,
क्लासरूम मैनेजमेंट प्राइमरी एम्स कौन करता है पुशिंग स्टूडेंट्स ना क्रिएटिंग लर्निंग कंडीसिव एनवायरनमेंट ना कंप्लीटिंग सिलेबस ओनली कोटा हम पिला माने क्लासरूम मैनेजमेंट प्राइमरी एम्स एट व्हाट वेरी गुड राइट आंसर होची ऑप्शन सी दैट इज क्रिएटिंग लर्निंग कंडीसिव एनवायरनमेंट लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट गोटे फ्री एनवायरनमेंट बायस फ्री एनवायरनमेंट फियर फ्री एनवायरनमेंट जहाँ भी आम कहीपर कौन ना बायस फ्री फियर फ्री लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करिबा ओके नेक्स्ट व्हिच मेथड एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग मोस्ट एई भितरु को मेथडटा गोटे छुआ भितरे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे लेक्चर मेथड ड्रिल मेथड डिस्कशन मेथड डिक्टेशन मेथड को मेथडटा गोटे छुआ मध्यरे क्रिटिकल थिंकिंग भाबिबा तार माइंड को खर्च करिबा कोउथिरे खर्च करिथाए आडा 247 ओडिया टेलीग्राम चैनल ने मिल जिवो 7 नंबर ओके वेरी गुड डिस्कशन मेथड तो लेक्चर मेथड आमे जानिचे इट इज पैसिव इन नेचर ड्रिल मेथड माने कौन जो आमे केवल रोट मेमोराइजेशन को फोकस करि थाओ बार बार प्रैक्टिस द्वारा मन रखा डिटेक्शन मेथड बा चिन्हटीकरण प्रक्रिया ताहा नुहे बरम डिस्कशन मेथड जेतेबेले आमे छुआ को गोटे टॉपिक बा गोटे प्रॉब्लम दे दोचे सपोज गोटे प्रॉब्लम दे देले किछि गोटे प्रोजेक्ट दे देले किछि गोटे टॉपिक दे देले सेही प्रॉब्लम रे जेतेबेले से डिस्कस करबा को लागुछि प्रॉब्लम सॉल्व करबा को लागुछि से डाइवर्जेंट वे रे विभिन्न दिगरु भाबिबा को लागुछि एंड सेही प्रॉब्लम टा सॉल्व करबा को लागुछि नेक्स्ट कौन टीचिंग एप्टीट्यूड इंक्लूड्स व्हाट कम्युनिकेशन स्किल क्लासरूम कंट्रोल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑल ऑफ द अबव टीचिंग एप्टीट्यूड इंक्लूड्स व्हाट कम्युनिकेशन स्किल क्लासरूम कंट्रोल ऑल ऑफ द अबव कोडा हबो 8 नंबर वेरी गुड टीचिंग एप्टीट्यूड रे आसीबो कि गोटे टीचर कम्युनिकेशन स्किल केमिति हबा दरकार प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्लासरूम कंट्रोल ठीक से बा एटा हमें कहि परबा एठी क्लासरूम कंट्रोल किछि किछि पिला जदी नेगेटिव भी भाबुतबो नेगेटिव नुह एठी होजे क्लासरूम मैनेजमेंट ओके क्लासरूम कंट्रोल माने होजे क्लासरूम मैनेजमेंट इफेक्टिवली तो राइट आंसर होजे यस ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ओके नेक्स्ट 9 number the role of a teacher in modern education is knowledge transmit authority figure facilitator of learning ना examiner गोटे टीचर रोल वर्तमान जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन चली से गोटे टीचर रोल कौन नॉलेज ट्रांसमिटर अथॉरिटी फिगर फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग एग्जामिनर यस वेरी गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग फैसिलिटेटर हे परिबे कि आमे कहि परबा गाइड हे परिबे कि आमे कहि परबा सुपरवाइजर ओके सुपरवाइज करि परिबे छुआ को किबा गाइड हे परिबे किबा फैसिलिटेटर हे परिबे नेक्स्ट 10 number a democratic classroom climate promotes what fear and obedience passive learning cooperation and participation rote memorization कोटा हबो a democratic classroom climates promote what वेरी गुड 10 नंबर सी कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ए डेमोक्रेटिक क्लासरूम को हमें कौन कहि परिबा भी डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम एंड ए जो कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन व्यतिरिक डेमोक्रेटिक क्लासरूम रे आउ कौन होइथे
ना एक्टिव पार्टिसिपेशन बा एक्टिव लर्निंग तो छुआ मानकर क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट क्रिएट होता है एंड एइथरे कोन होता है ना लीडरशिप स्किल छुआ मानक भितरे लीडरशिप स्किल पिला माने एनहांस होता है लीडरशिप स्किल गोटे छुआ भितरे डेवलप होता है देन डेमोक्रेटिक क्लासरूम रे कम्युनिकेशन स्किल मध्य छुआ भितरे एनहांस होता है कोन ना कम्युनिकेशन स्किल्स तो एई भली भाबरे आहुरी मध्य गोटे डेमोक्रेटिक क्लासरूम रे एम्पैथी एंड डिफरेंट जहाँ भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल रहिला क्लाइमेट प्रमोट्स एई सब जिंस करी थाए गोटे डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम हैला एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स कर क्यूरियोसिटी एवं इंटरेस्ट को इनकलकेट करी थाए लीडरशिप क्वालिटी छुआ मानक भितर बढ़े थाए कम्युनिकेशन स्किल बढ़े थाए ता सहित एम्पैथी सिंपैथी जहाँ भी क्वालिटीज रहिला एवरीथिंग एनहांस करी थाए ओके नेक्स्ट Learning by doing is emphasized by Froebel, John Dewey, Skinner ना Thorndike. Learning by doing method कहा द्वारा कुआ जाए छी? Learning by doing को कौन कुआ जाए? Hands-on activities. एटा किए कही चंदी? Right answer कौन होगा? Learning by doing is emphasized by yes. एक नंबर बी करेक्ट आंसर जॉन डी माने छुआ माने निजे करिबा सहित करी 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 तांकर पास्ट एक्सपीरियंस एवं तांकर निजर एम्पिरिकल नॉलेज सहित से माने वर्तमान रा प्रेजेंट नॉलेज को एक्वायर करिवे ओके नेक्स्ट कि मोटिवेशन इन लर्निंग हेल्प्स इन व्हाट लर्निंग रे जो मोटिवेशन ता सेटा हेल्प कोन करि थाए डिसिप्लिनली रोट लर्निंग ना सस्टेन्ड इंटरेस्ट ना पनिशमेंट कंट्रोल लर्निंग रे मोटिवेशन टा छुआ मानंकु कौन हेल्प करि थाए पिले 12 नंबर यस सस्टेन्ड इंटरेस्ट माने इंटरेस्ट को बढ़ाई थाए छियर बा तार क्यूरियोसिटी को एनकरेज कराई थाए क्यूरियोसिटी को डेवलप कराई थाए हेल्प्स करि थाए केमिति ता इंटरेस्ट को बजाय रखिबो गोटे लर्निंग को कंप्लीट करिबा पाई ओके नेक्स्ट देन आसला व्हिच इज ए लर्नर सेंटर्ड मेथड लेक्चर प्रोजेक्ट डिटेक्शन एंड ड्रिल मेथड रे कोन करे जे ना प्रैक्टिस then lecture method रे कौन only impart information learners and project method रे real life problem पिला को assign करा जाय थाए डिटेक्शन है डिटेक्ट करबा यस राइट आंसर होची ऑप्शन बी कि which is a learner centered method that is project method and why project method is one of the learner centered method ना इथरे रियल लाइफ प्रॉब्लम टे छुआ को असाइन करा जाय थाए एंड छुआ सेही प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई गोटे सिंगल इंडिविजुअल लागि पड़ी थाए पूरा निजर हैंड्स ऑन एक्टिविटी निजर क्रिटिकल थिंकिंग निजर क्रिएटिव थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जहाँ भी अछि सब किछु को इंक्लूड करके से सही सिचुएशन बा सही प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई लागि थाए जो थरे से तार इंटरेस्ट एवं क्यूरियोसिटी एवं नॉलेज को यूज करके ही डेवलप करे थाए नेक्स्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग लर्नर्स मीन डिफरेंसेस इन हुम एज ओनली ना इंटेलिजेंस इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ना जेंडर ओनली ना लैंग्वेज ओनली आमे जो कहूचे इंडिविजुअल डिफरेंसेस नो सिंगल इंडिविजुअल्स आर अलाइक ताले सही इंडिविजुअल डिफरेंसेस ता कोन कहा द्वारा हेई थाए 14 नंबर कोन हबो पिले वेरी गुड टिके पिला माने गोटे मिनिट
इंटेलिजेंस इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड वेरी गुड राइट आंसर होची ऑप्शन बी पिला माने कि इंटेलिजेंस इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड जेतेबेले आमे कहूचे इंडिविजुअल डिफरेंसेस मींस कोन जदी आमे कहबा छाड़ जहाँ भी होची चित्र तो एठी जदि आमे कहबा दुईटा इंडिविजुअल रहिले ताहाले सेमानक भितरे डिफरेंसेस केमिति आसुची ना सेमानक भितरे डिफरेंसेस आसुची मे बी ये हाईली इंटेलिजेंट ये एवरेज लर्नर एवरेज इंटेलिजेंट आ पाखे अच्छी इंटरेस्ट जदि एबे आमे कहले लर्नर सेंटर्ड दैट इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट मेथड ये कौन करूची प्रोजेक्ट मेथड रे इंटरेस्ट नउची ये प्रोजेक्ट मेथड रे नॉट इंटरेस्टेड तो एई भली भाबरे एप्टीट्यूड या पाखे जदि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अछि या भितरे कोन अछि ना आम पाखे इंटेलिजेंस अछि या भितरे इंटेलिजेंस नाही किंतु प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अछि तो डिफर करंती डिफरेंट वे रे हाइट हो वेट हो इंटेलिजेंस हो थिंकिंग पावर हो इंटरेस्ट हो एप्टीट्यूड हो किंबा कलर हो किंबा वे ऑफ बिहेवियर हो एवरीथिंग दे डिफर वन फ्रॉम अनदर पर्सन ओके नेक्स्ट टीचिंग becomes meaningful when teacher talks more students listen silently objectives are clear ना homework is heavy तो टीचिंग टा केते बेले मीनिंगफुल हेई पारिबो जेते बेले टीचर केवल कहि चलथिबे कहि चलदे धर मु एठी बक 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 हेगे जेबी ताले टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास टा इफेक्टिव होबो तमर आमे कमेंट बॉक्स ऑफ कर दबा तम माने किछि कहइबो नाही तम माने को स्कोप दबा नाही ताले कोन हबो वेरी गुड बहुत बढ़िया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ना ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर टीचर टॉक्स मोर मु खाली गप्पी देले किछि हबनी जिंसडा तमे बुझी परिबा दरकार स्टूडेंट्स लिसन साइलेंटली एडा गोटे पैसिव लर्निंग हेई गला कि टीचर खाली कहउछंदी एंड स्टूडेंट्स सुनुछंदी होमवर्क इज हेवी हेले छुआ बाई बर्डन क्रिएट करि दबा एटा तो छुआ माने कोन मीनिंगफुल हिसाब रे लर्न करि परिबे नाही किंतु जदी आमे कोन पढौचे कोन लर्निंग आउटकम अचीव करिवार अछि परीक्षार शेषरे बा पीरियड रो शेषरे बा गोटे इयर रो शेषरे सेटा जदी ऑब्जेक्टिव हमर फिक्स हेई थाए ताहले हमें कहि परिबा स्टूडेंट्स एटा गोटे ऑब्जेक्टिव क्लियर अछि तो एठी टीचिंग बिकम्स मीनिंगफुल हेई परिबो ओके प्रणाम प्रियु नेक्स्ट बा कोन व्हिच अप्रोच स्ट्रेसेस लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस को अप्रोच ता स्ट्रेस करि थाए लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस पाई पिला माने एटी कहिछि बिहेवियरिस्टिक कंस्ट्रक्टिविस्ट ट्रेडिशनल ऑथोरिटिज्म वेरी गुड बहुत बढ़िया कौन बीएड एग्जाम पाई डर एठी तो बीएड एग्जाम क्लियर हैला राइट आंसर ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविस्ट को अप्रोच स्टेट करे लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस ना कंस्ट्रक्टिविज्म रे गोटे छुआ तार एठी कोन कहछि ना ये प्रायर एक्सपीरियंस को यूज करबा प्लस प्रेजेंट नॉलेज को यूज करी कि गोटे नोशन बा कांसेप्ट डेवलप करबा बा तार आइडियाज बा प्रेजेंट थिंकिंग टाको डेवलप करबा एंड बिहेवियरिस्टिक कोन कहछंती बिहेवियरिस्टिक मने रखि था से माने कहछंती कि एनवायरनमेंट ऊपर फिजिकल एनवायरनमेंट कि फिजिकल एनवायरनमेंट गोटे छुआ को कौन प्रोवाइड करि थाए ना स्टिमुली फिजिकल एनवायरनमेंट गोटे छुआ को स्टिमुली प्रोवाइड कला एंड जो टाइप रो स्टिमुली फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूची से कौन करूची सेही प्रकार रो रेस्पॉन्स दोउची ओके सेही प्रकार रो रेस्पॉन्स दोउची तो एनवायरनमेंट हमकु जो स्टिमुली देला हमें सेही प्रकार रेस्पॉन्स दोउछे सेटा हला बिहेवियरिस्टिक थ्योरी रा एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट माने जोटा चिल्ड्रन तार एक्सपीरियंस रो लर्न करूची से सेटा कोन यूज करूची ना तार प्रेजेंट कांसेप्ट डेवलप करूची लर्निंग करूची थ्रू एक्सपीरियंस देन ट्रेडिशनल जोटा हमें कहि परिबा इट इज बेस्ड ऑन लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग लेक्चर मेथड जो थरे कि केवल टीचर निज आडू टीचर सेंट्रिक मेथड रे कही चलथिबे एंड स्टूडेंट माने किछि बुझंतु न बुझंतु साइलेंटली सुनिबे देन अथॉरिटेरियन मेथड आल्सो कॉल्ड टीचर सेंट्रिक मेथड ओके टीचर सेंट्रिक ही काहे के टीचर सेंट्रिक टीचर सी अथॉरिटेरियन बा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हेड ऑफ द क्लास रोल प्ले करबे सी जहा कहिबे से हबो तांको अनुसार लेक्चर हबो तांको अनुसार सब किछि हबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन स्टूडेंट मान को टीचर को टीचिंग रे हेल्प करिवे एंड टीचर को गाइड करिवे एंड टीचर को गाइड करिवे
यस डीटा भी लेक्चर मेथड बुझीगला। केते नंबर 16 नंबर गला एबे 17 नंबर को जिबा। बुझीगला काहे के जे पचारि थिले ए काहे के नुवा बोली। नेक्स्ट कि गुड टीचर शुड बी बायस्ड पार्शियल न्यूट्रल एंड फेयर स्ट्रिक्ट ऑलवेज। गुड टीचर केमिति हबा दरकार। सत्तर नंबर सी यस न्यूट्रल एंड फेयर। बायस्ड हेले तो से गुड टीचर केबे भी पारबे नहीं। गोटे छुआ पई भलो हेले आ गोटे छुआ पई खराब हेबे। पार्शियल तो नुआ स्ट्रिक्ट को म्हणजे आमे गुड टीचर कहि परबे नहीं। स्ट्रिक्ट टीचर अथॉरिटेरियन रोल प्ले करे किंतु सी जदी न्यूट्रल एंड फेयर सबु छुआंग पई रहिबे ताले आमे तांकू कहि परिबा ही और सी इज ए गुड टीचर। नेक्स्ट क्लासरूम डिसिप्लिन इज बेस्ट मेंटेन थ्रू। क्लासरूम डिसिप्लिन कहा द्वारा मेंटेन हे परिबो पिला माने। फेयर माने होउची कि तमे माने समस्त को ठीक नजर रे सठिक नजर रे देखिबो। क्लासरूम डिसिप्लिन इज बेस्ट मेंटेन थ्रू फियर कॉर्पोरल पनिशमेंट म्यूचुअल रेस्पेक्ट स्ट्रिक्ट रूल ओनली। वेरी गुड राइट आंसर होची ऑप्शन सी दैट इज म्यूचुअल रेस्पेक्ट। जदी एटा हमर क्लासरूम तुमे जेमिति रेस्पेक्ट मते दोछ एज ए टीचर इट इज माय सोल रेस्पोंसिबिलिटी कि मु मध्य तुमको सेही भली भाबरे रेस्पेक्ट प्रोवाइड करिवि। म्यूचुअल रेस्पेक्ट एमती ना कि मुझे कभी आबे जाबे तू कौन कहूचु एमती। टीचर रो गोटे रोल सब बेले मन रखि था। तुम फ्यूचर टीचर हबा को जाउछ तम भितरे पेशेंस ता निहाती भाबरे रहिबा दरकार। विदाउट पेशेंस तमे केबे टीचर हेई परिबो नाही। पेशेंस परे सेकंड थिंग तम पाखरे गोटे बिहेवियर पर्टिकुलर बिहेवियर वे ऑफ बिहेवियर रहिबा दरकार। मींस तमे एज ए टीचर तम स्टूडेंट मानन को को हिसाब रे बिहेवियर करिबा दरकार। ए तू एटा कर दे ए तू एटा खाई दे ए तू एटा नहीं जा एमिति कोनसी तमे काहा को मध्य कहबा नाही। ओके म्यूचुअल रेस्पेक्ट समस्ते समस्तन को इक्वल रेस्पेक्ट दबा। एज ए टीचर मु मध्य तमको ठीक बिहेवियर करबी। मु तमरा माने कोन जहाँ भी थिंकिंग अच्छी ताकू रेस्पेक्ट देवी वैल्यू करबी एंड ऑल्सो तमे तम सामना रू एज ए टीचर हिसाब रे मते जेतु सी आम गुरु आमे भी सेमिति रेस्पेक्ट दबा। तो सब बेले टीचर स्टूडेंट भितरे गोटे कोरियर रिलेशनशिप गोटे म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहिबा दरकार। पनिशमेंट हबो नाही फियर हबो नाही स्ट्रिक्ट रूल हबो नाही। ओके नेक्स्ट कि टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट मेनली असेस व्हाट सब्जेक्ट मास्टरी टीचिंग पोटेंशियल मेमोरी पावर ना राइटिंग स्पीड। कोटा हबो पिले 19 नंबर वेरी गुड बी टीचिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट बा 20 नंबर व्हिच इज द मोस्ट इफेक्टिव रेनफोर्समेंट पनिशमेंट थ्रेट प्रेज एंड स्कोल्डिंग। कोटा गोटे इफेक्टिव रेनफोर्समेंट निया तुम समस्त गरम गरम चा सकाल क्लास एमती ही जीव डायरेक्टली पठे पारिनी इनडायरेक्टली देखे दिए टिके कि समस्ते चा को हाथ में धर बिस्कुट धर आ पाठ पढ़। ऑप्शन सी है प्रेज कि रेनफोर्समेंट माने कौन आमे जो पिलाटी को पुश ऑफ करुचे बा रेनफोर्स दोजे आमे ताको पछरु पुश करुचे कि आगो को जा डेवलप हो जहाँ भी। तो पनिशमेंट गोटे पॉजिटिव जीवनी इट इज नेगेटिव। ओके देन कौन थ्रेट मध्य नेगेटिव जीव। देन स्कोल्डिंग माने गालीटा मध्य नेगेटिव रे जीव। तो पॉजिटिव बा इफेक्टिव रेनफोर्स माने कोउटा तमको फोर्स करूची आगो को जीवा पई कोउटा तम क्वालिटी को एनहांस करूची कोउटा तमको आगो को जीवा पई पथ देखौची। जेते बेले मु गुड कि वेरी गुड गोटे क्लास रे तमे जीव
छोट छोट छुआ माने आंसर दौरान तुम से कहीदेव येस बहुत बढ़िया एंड तुम प्रेज रहिबो गुड वेरी गुड एक्सीलेंट जो प्रेजटा भी गोटे टीचर छुआ को दियंती तो कौन हम से गोटे छुआर इफेक्टिव रेनफोर्समेंट हम बा सी से बेस्ट मोटिवेट हम येस जदि आज मु गुड पाइली काली मु एक्सीलेंट पाइबी ताले जदि सी एक्सीलेंट पाउची मु सेठी केमिति एक्सीलेंट पाइबी जनकर कंपटीशन कंपिटिटिव नेचर ए सब जिंस गुडा डेवलप हम नेक्स्ट 21 नंबर ए टीचर हु एनकरेजेस क्वेश्चन प्रमोट इनडिसिप्लिन क्वेश्चन जे प्रमोट करते कौन हुए इनडिसिप्लिन क्रिएट है क्यूरियोसिटी कंफ्यूजन ना नॉइज कौन हुए पिला माने वेरी गुड ऑप्शन बी क्यूरियोसिटी डेवलप होता है ऑप्शन बी नेक्स्ट 22 नंबर टीचिंग इज सक्सेसफुल व्हेन टीचिंग टा केते बेले पिले सक्सेसफुल बा सफलतार रूपायन निए ऑप्शन ए टीचर फिनिश सिलेबस जदी टीचर केवल सिलेबस फिनिश कर दियंदी स्टूडेंट स्कोर मार्क्स जेते बेले तमे एज ए स्टूडेंट अधिक मार्क रखिबो ताले टीचिंग टा सक्सेसफुल ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव जहा जहा हमें ऑब्जेक्टिव बा उद्देश्य रखिथिबा से जदी उद्देश्य साधन हे जाउची सेटा ना क्लास इज साइलेंट जदी होल क्लास पूरा साइलेंट बसिबो ताले सेटा कोटा बा पिले बहुत बढ़िया जने जने बी दौरान ओके वेरी गुड राइट आंसर होची ऑप्शन सी पिला माने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव तमे बीएड को जेते बेले जाउछ गोटे लेसन प्लान थाए पिले लेसन प्लान ओके तो लेसन प्लान ने कोन हैला तो लेसन प्लान स्ट्रक्चरटा प्रायतः एमिति थाए कि धर एटा गोटे लेसन प्लान पेज आमे नेले तो फास्ट एमिति गोटे गार थिबो एठी गोटे एंड मझरे एतिकी स्पेस थिबो एठी तमे स्कूल रो नेम स्कूल डेट ए सब जिनस मेंशन करिवो एंड ए पटे तमे कलापटा कार्य माने तमे ब्लैक बोर्ड पाई कोन कोन यूज करछो कोन कोन नेइछो आ एठी तमरो रहिबो कोन ना साधारण उद्देश्य बा तमरो जनरल एम्स एठी तमरो जनरल एम्स रहिला देन कोन तमरो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो गुडा अचीव करिवार अछि स्पेसिफिक एम्स स्पेसिफिक साधारण उद्देश्य स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बा लर्निंग ऑब्जेक्टिव एठी मेंशन थाए 1 2 3 4 ए विषयटा पढि साला परे पिला एटा करिवे ए विषयटा पढि साला परे पिलाटा एया करिवो एटा करिवो सब कॉन्फिडेंटली सब जिंस मेंशन थाए एंड ऑल दोस थिंग्स आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो से जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव गुडा का जेते बेले प्रॉपर्ली अचीव हे जाय थाए माने वैलिडिटी गोटे जिनस अच्छी माने कौन व्हाट वी इंटेंडेड टू मेजर जदि आमे जहाँ मेजर करबा को चाहूचे सेया आमे ठीक भाव में मेजर कर दउचे ताहले एटा को जाय वैलिडिटी एंड यस सो दैट लर्निंग ऑब्जेक्टिव जेते बेले प्रॉपर्ली इफेक्टिवली अचीव हे जाउची आमे सेते बेले कहि दउचे कि आम टीचिंग टा सक्सेसफुल हैला नेक्स्ट बा कि टीचिंग इज सक्सेसफुल व्हेन एटा पुनी थरे रिपीट हे जायची देखो 24 नंबर व्हिच क्वालिटी हेल्प्स ए टीचर टू अंडरस्टैंड द लर्नर्स बेस्ट सिंपैथी एम्पैथी स्ट्रिक्टनेस डोमिनेंस ए भितरु को क्वालिटीटा टीचर को हेल्प करे छुआ मानन को बेटर अंडरस्टैंड करबा पाई कोटा आबा पिले 24 डी 24 बी 24 सी 24 ए अरे बाबा आज मते आलू बाइगण कखारु सारू सब मिलगला घांट पकई देकी तरकारी कर दबो शाबाश तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जो माने बी कहउछनी डोमिनेंस हबो नाही काहेकि हबोनी डोमिनेंस माने तमे तांको अंडर रे छुआ माने को डोमिनेट करे कि चापी देकी रखि दउछ छुआ माने फ्रीली तमा आगे किछि एक्सप्रेस करि पाउ नांदी तांको भावना को प्रकाश करि पाउ नांदी किछि कहि पारु नांदी डोमिनेंस हबो नाही एटा गोटे क्वालिटी हेल्प्स ए टीचर टू अंडरस्टैंड लर्नर तमे जतबेले तांको डोमिनेट करि रखि दउछ तमे केमिति तांको कथा जानिबो ओके
तापर आसला स्ट्रिक्टनेस जेतेबेले तमे स्ट्रिक्ट हे जाउछ पिलाटे तो भय रे डरुथुबो तम प्रति भय आसीबो से तुमको बुझीबो केतेबेले तापर आसला सिंपैथी सिंपैथी डज नॉट मीन कि हमें देखिदेले हां कि ता घरे किछि नाही ओहो नाही तो पिलाटा कोन करबो हो हो बस बस सेया नुह एम्पैथी एम्पैथी माने गोटे स्टूडेंट जगह रे टीचर टे रही कि तार एक्चुअल कंडीशन कोन तार जदी किछि प्रॉब्लम्स होउछि ए प्रॉब्लम्स ता काहे की होउछि जेतेबेले टीचर से लर्नर्स जगह रे रही कि जानिबे ताहाले जाय कि कोन हबो ना क्वालिटी हेल्प्स ए टीचर अंडरस्टैंड लर्नर्स बेटर टीचर सेतेबेले ही पर्सनली जेतेबेले कनेक्टेड हेबे ता सिचुएशन ने निजको रखी कि बुझिबा को ट्राई करिवे सेतेबेले ही टीचर कोन करि परिबे गोटे छुआर कोन प्रॉब्लम हेछि ताकू बेटरली बुझी परिबे तो राइट आंसर होछि एम्पैथी ओके केमिति अछंती मैम आपण मैम पूरा फिट अछंती खाई पी की सुस्थ सबल हृष्ट पृष्ठ हेगी अछंती तो बस नेक्स्ट लर्निंग इज मैक्सिमम व्हेन स्टूडेंट्स आर पैसिव फियरफुल एक्टिव ना साइलेंट लर्निंग इज मैक्सिमम केते बेले व्हेन स्टूडेंट्स आर प्रणाम रश्मि वेरी गुड स्टूडेंट्स आर एक्टिव जेतेबेले सेतेबेले मैक्सिमम माने लर्निंग अधिक हेई परिबो एक्वायर हेई परिबो जेतेबेले स्टूडेंट्स आर एक्टिव नेक्स्ट व्हिच फैक्टर अफेक्ट्स लर्निंग मोस्ट क्लासरूम साइज मोटिवेशन ना फर्नीचर ना यूनिफॉर्म को फैक्टर टा अफेक्ट्स करिथाय लर्निंग प्रोसेस को मोस्ट व्हिच फैक्टर श्रद्धा आसिले ना से पिलाटा नाही नले पचार था श्रद्धा तमे एठी कुआडे आर थर मन अच्छे यही श्रद्धा को बोधे से पचार श्रद्धा तमे एठी कौन करूछ तमे भी एठी यस वेरी गुड राइट आंसर होची ऑप्शन पी कौन ना मोटिवेशन मोटिवेशन अफेक्ट्स लर्निंग मोस्ट जदि गोटे छुआ मोटिवेट नाही ताले कौन हम ना से लर्निंग पाई रेडी नहीं ताकू तमे जेते पेल किछि होबो नहीं जा पढ़ पढ़ से काई पढ़िबो से तो मोटिवेट नहीं ठीक अछि बापा मा हिसाब रे घुसरे नौचा घुसरे नेले भी से कोन करबो से एम्ति जिबो बही धरिबो हबो हे के आ किछि पढ़िबो नाही तापर कोन परीक्षा रिजल्ट आसला बेलको आलू कि तू तो डेली पढ़थुलु आलू कोन आलू अरे भाई से तो मोटिवेट नथिला तमे ताकू नै कि खाता बही धरे कि खीर बिस्कुट खुआइले कोन हबो सो मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल ओके नेक्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड फोकस ऑन टीचिंग स्किल टीचिंग एटीट्यूड टीचिंग इंटरेस्ट ऑल थ्री कोटा हबा अरे सीरियसली आर्थर के गोटे थिला से श्रद्धा आसला पर कहितला श्रद्धा तू भी एठी मु सेया मने पड़ी गला श्रद्धा नाटा पढ़ देली तो किए कहितला मोर मन नै किंतु क्लास रे मोर कहितला यस 27 होची ऑप्शन डी that is all three teaching skill teaching attitude and teaching interest निहाती भाबरे दरकार ओके नेक्स्ट हैला an effective teacher is one who जने effective teacher सीए काहा को कहबा ना ऑप्शन ए टॉक्स कंटिन्यूअसली ना एनकरेजेस लर्निंग ना पनिशेस ऑफन ना कंट्रोल स्ट्रिक्टली हमें इफेक्टिव टीचर काहा को कहबा An effective teacher is one who talks continuously, encourages learning, punishes often, controls strictly. Yes? Option B is the correct answer. Encourages learning. जे छुआ को प्रति मोमेंट प्रति स्टेप रे एनकरेज करंदी आउ गोटे स्टेप आगु को जिबा पई एंड बेटर करिबा पई नेक्स्ट लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रमोट्स व्हाट गोटे लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट कौन प्रमोट करे एंजाइटी कंपटीशन कॉन्फिडेंस ना फियर गोटे लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट कौन क्रिएट करे एंजाइटी कंपटीशन कॉन्फिडेंस फियर मॉर्निंग रे शनिवार दिन प्रति शनिवार 9टा बेले ही क्लास होउची यस कॉन्फिडेंस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कि व्हिच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टीचिंग मोटिवेशन इवैल्यूएशन पनिशमेंट गाइडेंस कोटा गोटे टीचिंग रो फंक्शन नुहे
मोटिवेशन, इवैल्यूएशन, पनिशमेंट, गाइडेंस। ठीक अच्छे विजयनी निहाती भाव में बुझेदेवी। सी होची पनिशमेंट, एटा गोटे नुह मोटिवेट करबा, इवैल्यूएट करबा, गाइडेंस प्रोवाइड करबा, काउंसलिंग पैटर्न करबा, ठीक अछि बट पनिशमेंट नुह। क्लास लास्ट को कहूँ विजयनी, क्लासरूम इंटरैक्शन शुड बी टीचर डोमिनेटेड, स्टूडेंट डोमिनेटेड, बैलेंस्ड, साइलेंट। क्लासरूम इंटरैक्शन टा केमिति हवा दरकार, टीचर डोमिनेटेड ना स्टूडेंट डोमिनेटेड ना बैलेंस्ड ना साइलेंट। एकतीस नंबर बी। वर्षा सारा एग्जाम हेला जाए क्वेश्चन हम गोटे दिन रे कौन खाईदब कि आग इजी रु जाओ आसुची कि नहीं डे बाय डे कौन आसुची देख गोटे जाए। ओके तो ये हूँ ऑप्शन सी बैलेंस, ना कि टीचर डोमिनेटेड ना कि स्टूडेंट डोमिनेटेड। बोथ टीचर एवं स्टूडेंट का भितर गोटे कोरिलियर रिलेशनशिप रहिबो। अंजलि क्लास टाइम होची 9 AM, 9 AM एवरी सैटरडे। पिला माने एवरी सैटरडे 9 AM रे ही मु तुमरा कंटिन्यूअसली एयर बीएड एग्जाम हबा जाए प्रति शनिवार तुमरा कौन करबी 9टा बेले नेबी टीचिंग एप्टीट्यूड हो न तुमरा एजुकेशनल अवेयरनेस हो मु निहाती भाव में क्लास नहीं के आसबी थरे टीचिंग एप्टीट्यूड कले थरे एजुकेशनल अवेयरनेस रो करबा देन एमिति भाव में तुमरा पीरियडिकली प्रति शनिवार दिन 9टा बेले को क्वेश्चन नहीं के आसबी एंड डिस्कशन करबा। ओके एटा टीचिंग एप्टीट्यूड रो फर्स्ट क्लास एंड तुमरा गोटे एजुकेशनल अवेयरनेस रो मध्ये गोटे क्लास हेची आज टीचिंग एप्टीट्यूड रो फर्स्ट क्लास। ओके नेक्स्ट कि इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स सब्जेक्ट टीचिंग मेथड्स ऑल ऑफ द एबव। गोटे इफेक्टिव टीचिंग कोन रिक्वायर्स करूची मोर सैटरडे पिला माने तुमको मंडे रु सैटरडे पर्यंत सबु टीचर कर क्लास मिलबो। मंडे जने सार कर, ट्यूसडे जने सार मैम कर, वेडनेसडे जने कर, फ्राइडे तो तुम सब्जेक्ट वाइज साइंस आर्ट्स तुमरा जहाँ भी बीएड रो सब्जेक्ट अछि तो सार क्लास नेबे। सार काहे की क्लास नेबेनी तो तुमरा जहाँ भी यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। साइंस आर्ट्स रो सब्जेक्ट जहाँ भी अछि मंडे रु फ्राइडे सबु टीचर कर दिने दिने क्लास हबो। तमे एग्जाम जाए सबु टीचर कर प्रतिदिन निहाती गोटे गोटे क्लास पाइब। थरे गोटे सप्ताह हे जाऊ मंडे रु हे गले ही तमे टाइम प्रति अक्वेंटेड हे जिवो। ओके सबु से 9टा बेले। ओके बीएड रो जहाँ भी क्लास हबो 9 AM तमरा जहाँ भी क्लास तमरा साइंस हो, बायो हो, तमरा फिजिक्स हो, तमरा जहाँ भी हो, तमरा मैथ हो, तमरा हिस्ट्री हो, तमरा ज्योग्राफी हो, एवरीथिंग सबो चैप्टर 9टा बेले ही तमरा हबो। बाकी या मंडे जने नेबे, ट्यूसडे जने जिमे, वेडनेसडे जने नेबे, थर्सडे जने, फ्राइडे जने, सैटरडे जने। तो आरा सोमवार ठू शनिवार जाई तम माने क्लास करि देले 9टा बेले प्रति 9टा बेले क्लास रहइबो। तमे थरे सोमवार शनि जाई करि देले सेही सोमवार शनि अपकमिंग एग्जाम जाए तमरा प्रैक्टिस हेकी रहि जाइथिबो। ओके क्लास टाइमिंग थरे करे देले तुमे जानि परिबा एंड रेस्पेक्टिव टीचर करबा आगरु ही तुमको इन्फॉर्मेशन देबे। ओके मोर टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट है नहीं है गले निहाती भाव में मु क्लास रे तम मानकु लिंक प्रोवाइड करबी डोंट वरी। नेक्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड इंप्रूव्स विथ प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शन एज ओनली सैलरी अथॉरिटी। ओएसटीटी क्लास हबो गुरुवार 9 रु 10 घंटा ही हबो। तो राइट आंसर होची यार प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शन ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट ए टीचर शुड अडॉप्ट टीचिंग अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक टाइम लर्नर डाइवर्सिटी एग्जामिनेशन। कोटा हबो ए टीचर शुड अडॉप्ट टीचिंग अकॉर्डिंग टू ठीक अच्छे श्रद्धा ऐड करदेवी मु किछि पिला को पठे आस्ट ठीक अच्छे शुभश्री
एटा हबो यस लर्नर्स डाइवर्सिटी। नेक्स्ट जीवा व्हिच प्रमोट सेल्फ लर्निंग लेक्चर प्रोजेक्ट वर्क डिटेक्शन ड्रिल कोटा सेल्फ लर्निंग को ए भितरु प्रमोट करे पिले कोटा यस ऑप्शन बी प्रोजेक्ट वर्क रे से कौन करिवो ना तारा सेल्फ लर्निंग हेई पारिबो। तो पिला माने आजिर क्लास रे 35 क्वेश्चन ही तम मानक पई थिला एंड यस आमे तो क्लास करूछे एंड करबा अपकमिंग तम एग्जाम जाए मध्य एंड तम माने जानि थिबो कि द्रोण 7.0 हमर 30 डिसेंबर स्टार्ट हे गलानी क्लासेस ऑलरेडी मध्य हे सारिलानी। जदि इफ एनीवन इंटरेस्टेड कि प्रिपरेशन तमे गोटे सिस्टमेटिक वे रे आ गोटे भलो वे रे करबा को आहुरी भी बेटर वे रे चाहूछ एठी तुमको क्लास भलो लागुची तमे फील करूछ नाइ क्लास बेटर अछि मु क्लास करि परिबी मु एथरु कंफर्टेबल ताले हम सहित मिसिके तमे जॉइन हे परिबो द्रोण 7.0 रे एंड जो माने जॉइन हबा को चाहथो ऊपर तो कोड अछि आ लेखु नाही यूज कोड YT46 फॉर सम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट किछि मात्रा रे ओके सेमती किछि नाही कि यस हमको नबार अछि तुमरा क्लासेस चलिबो तमे क्वेश्चन आंसर करिवो किंतु बेटरली जदि करबा को चाहूछ बैच भी तम पई अछि तमे बैच परचेज करिकि तमे तम प्रिपरेशन को आहुरी स्ट्रांग करि परिबो ओके थैंक यू एवरीवन। तो आजिर क्लास टी को एठी एंड करबा देखावा नेक्स्ट सैटरडे ठीक एई 9टा बेले। तो आउ केही जॉइन हवा को भूलिबो नाही जो माने क्लास पर भी देखिबो नेक्स्ट सैटरडे 9टा बेले रेडी थिबो ओके सरीला क्लास साइस्मिता तो कॉलेज जाओ ऑल द बेस्ट एवरीवन नियति भाबरे चैप्टर वाइज ही एमसीक्यू आनिबा ओके थैंक यू एवरीवन देखा हबा नेक्स्ट सैटरडे से पर्यंत ऑल द बेस्ट समस्त निजरा पढ़ा जारी रखिथो थैंक यू।